तो शुरू करते हैं अपनी नई सीरीज़ जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 1। एंड इसमें बेसिकली हम रीडिंग करेंगे पूरी एनसीईआरटी की। एंड जो इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं उसको बस एक बार फिर से पढ़ेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ना कुछ नहीं है, और जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। How wonderful is the living world? The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitat in which we find the living organism, could it be cold mountain, deciduous forest, oceans, freshwater lakes, deserts, hot springs, leave us speechless. The beauty of the galloping horse, of the migratory birds, the valley of the flowers, or the attacking shark evokes awe and deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among the members of the population and among the population of a community, or even the molecular traffic inside the cell, make us deeply reflect on what indeed is life. This question has two implicit questions within it. The first is the technical one, and seeks the answer to what living is opposed to the non-living, and the second one is the philosophical one, which seeks the answer to what the purpose of life is. The scientist, as a scientist, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living. तो 1.1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म शुरू करते हैं. If you look around, you will see a large variety of the living organism, be it a potted plant, insects, birds, your pets, animals, plants. There are several organisms that you cannot see with your naked eye. यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, but they are all around you. If you were to increase the area that you make observation in, the range and the variety of the organisms that you would that you would see will increase. Obviously, if you were to visit a dense forest, you will probably see a much greater number and the kind of living organism, क्योंकि वहाँ पे रहते ही बहुत सारे हैं. Each different kind of plant, animal, organism that you see represent a species. The number of species that you know and described range between 1.7 to 1.8 million. ये याद रखना है. This refers to biodiversity, or the number and type of organism present on Earth. We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know that the plant and animal in our own area by their local name. The name जो local name would vary from place to place, and even within a country के अंदर ही एक ही जानवर के पता नहीं कितने नाम होते हैं. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find the ways to means to talk to each other to refer to organism we are talking about. Hence, there is a need to standardize the naming of the living organisms, so such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called the nomenclature, namkaran. Obviously, the nomenclature or the naming is only possible when the organism is described correctly and we know what organism the name is attached to. ठीक है. This is identification. एक ही जिस जानवर से नाम जुड़ा हुआ है आइडेंटिफाई करे basically. In order to facilitate the study, number of scientists have established a procedure to assign the scientific name to each organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on the agreed principle and criteria which are provided by International Code for Botanical Nomenclature, जो कि याद रखना है, जिसका फुल फॉर्म ICBN पूछा जा सकता है. International Code for Botanical Nomenclature. You may ask how organisms are named. Animal taxonomists have evolved an international code for zoological nomenclature. तो जानवरों एनिमल्स के लिए zoological nomenclature, international code of zoological nomenclature, और प्लांट्स के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल nomenclature. ठीक है. The scientific name ensure that each organism has only one name. Okay. Has only one name. Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive to the same name. ठीक है. तो इस तरीके से वो डिस्क्राइब हो कि उसी नाम पर वो रीच कर जाए ना. दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म. और किसी के लिए नहीं होना चाहिए, एकदम यूनिक नाम चाहिए बेसिकली. तो बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड principle to provide a scientific names to the known organisms. Each name has two components. ठीक है. हर नाम के दो पार्ट है, generic name और specific epithet. Not the species name but the specific epithet. ठीक है. This system of providing a name with two components is called bionomical nomenclature, क्योंकि दो components से name बन रही है. This naming system is given by Carolus Linnaeus. ठीक है.
ये याद रखना है. Is being practiced by biologists all over the world. The naming, ये सारे biologists ने इस चीज़ पे agree किया. The naming system using a two-word format was found convenient. Let us take example of mango to understand the way providing a scientific name is better. The scientific name of the mango is Mangifera indica. इसमें तुम देख सकते हो एम कैपिटल है और जो इंडिका का स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट वर्ड स्मॉल है. ये सारे छोटे मोटे रूल्स होते हैं, पढ़ेंगे. लेट अस सी हाउ इट इज अ बायनोमिकल binomial name. In this name mangifera represent the genus, ठीक है, genus, while the indica in a particular is a particular species or the specific epithet, ठीक है. Other universal rules for the nomenclature are as follows. Biological names are generally in Latin, ठीक है, लैटिन के होते हैं. written in italics, ऐसे ऐसे तिरछा तिरछा, and they are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. Origin से नहीं फर्क पड़ता. The first word in the biological name represent the genus, while the second component denotes the specific epithet. Both the word in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics, ठीक है, indicating their Latin origin. The first word denoting the genus starts with a capital letter, while the specific epithet starts with a small letter. It can be illustrated with the example Mangifera indica. Name of the author appears after the specific epithet, that is, at the end of the biological name, and is written in abbreviated form. Example Mangifera indica Lin, यानी कि Linus. ठीक है. It indicates that this species was first described by Linus. Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is called classification. Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable character, जैसे कि chemistry में elements को किया था हमने. For example, we easily recognize groups such as plants, animals, or dogs, cats, or insects. The moment we use any of these terms, we associate certain characters, है ना, विच द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप, है ना. किसी कैरेक्टर को देख कर ही तो तुम बोलते हो कि ये पर्टिकुलर है. व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग? यू लाइक, हाँ पूछ होगी, ये होगा, ऐसे कान होंगे, ऐसे नाक होगी. ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस will see dogs and not cats, है ना. Now if we were to think of Alsatians, we know what we are talking about. Similarly, suppose we were say mammals, ठीक है. You would of course think of animals with external ears, body hair. Likewise, in a plants, if we try to talk of wheat, a picture in each of our mind will be of wheat plants, not of a rice, ठीक है, or any other plant. Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plant, animals, etc. are convenient categories we use to study organisms. तो बेसिकली जितने भी ये ग्रुप्स हैं जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रुप, मतलब किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, डॉग्स कैट जो भी हो गए, इन सबको हम क्या कहते हैं, मतलब साइंटिफिक टर्म्स के लिए क्या है, कैटेगरीज के लिए बेसिकली टैक्सा. Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels, ठीक है. बहुत ही अलग अलग लेवल पे वो कैटेगरीज को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है. जैसे प्लांट भी एक टैक्सा है, वीट भी एक टैक्सा है, ठीक है. सिमिलरली एनिमल्स भी एक टैक्सा है, मैमल्स भी एक टैक्सा है, डॉग्स भी एक टैक्सा है. ऑल आर टैक्सा. बट यू नो दैट डॉग्स इज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स. बेसिकली कैटेगरीज वो तो अलग ब्रांच में आ रहा है, लेकिन there are animals, mammals, dogs represent a taxa at different levels. Hence, based on the characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is called taxonomy. Extended in the internal structure along with the structure of the cell, development of the process, ecological importance, information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies. Hence, characterization, identification, classification, and nomenclature are the process there that are basic to taxonomy. Taxonomy is not something new. Humans have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. In early days, human beings need to find sources for their basic need of food, clothing, shelter,
Hence earliest classification were based on the uses of the various organism. ठीक है, जिससे कपड़ा बना लिया वो कपड़े वाला ठीक है. So human beings were since long not only interested in knowing more about the different kind of organism and their diversities, but also the relationship among them. This branch of study was referred to as systematics. The word systematics derived from the Latin word systema, which means systemic arrangement of organism. Linus used Systema Nature as the title of his publication. उसकी book थी, ठीक है. The scope of systematics was later enlarged to include the identification, nomenclature, classification system. It takes in account evolutionary relationship between the organism. याद रखना, systematics takes in account of evolutionary relationships between the organism. अब आ गए 1.2 पे, which is taxonomic categories. ठीक है. So classification is not a single step process, but involves the hierarchy of steps in which each steps represent a rank or a category. Since category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category, and all categories together constitute a taxonomic hierarchy. Each category referred to as a unit of classification, in fact, represent a rank and is commonly termed as taxon, plural taxa. ठीक है. Taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. Insects represent a group of organisms sharing a common feature like 3 pairs of jointed legs. It means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus are given a rank or category. जब यहाँ पर एक कैरेक्टर की बात कर ली गई है, पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग, ठीक है, तो उसके हिसाब से कैटेगराइज कर दिया गया इंसेक्ट्स को. मेन कैरेक्टर मेमेलियन में आप बता सकते हो कि मेमरी ग्लैंड, ठीक है, फॉर एग्जांपल. Can you name other such group of organism? Remember, the group represents the category. Category further denotes rank. Each rank or a taxon, in fact, represent a unit of classification. This taxonomic group slash categories are distinct biological entities and are not merely morphological aggregates. सिर्फ ऊपर से देख के नहीं बताया. Taxonomical studies of all the known organisms have led to a development of a common category such as kingdom. मतलब उनको कब करते गए तो एक kingdom, phylum, division, ठीक है, अलग अलग लेवल पे, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड दोज इन प्लांट्स एंड एनिमल. All organisms, including those in plants and animal kingdom, have species as the lowest category. तो species the lowest category. बेसिकली हम कैटेगरीज को ही कैटेगराइज करके उनकी बात कर रहे हैं, और वो कैटेगरीज यहाँ पर दे रखी हैं: किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. कीप द पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक. ठीक है. नाउ द क्वेश्चंस. A question you may ask is how to place an organism in various categories. The basis requirement is the knowledge of characters of individual or a group of organisms. This helps in identifying the similarities and dissimilarity among the individuals of the same kind of organism as well as the other kinds of organisms. Species की बात करते हैं. Species. Taxonomic studies consider a group of individual organisms with a fundamental similarity as species. One should be able to distinguish one species from other closely related species based on the distinct morphological differences. Let us consider a Mangifera indica, Solanum tuberosum, which is a potato, Panthera leo, which is a lion. All three names, indica, tuberosum, ये लियो, ये सब क्या है? इंडिका है ना. बेसिकली स्पीसीज से वर्ड उठाए गए. रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट, while the first word जो कि था मैंगीफेरा, सोलेनम, पेंथरा, ये क्या है? ये सब जेनर है, यानी कि जीनस, एंड रिप्रेजेंट द अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सॉन, जो कि क्या है? जीनस. Each genus may have one or more than one specific epithet representing a different organisms but having a morphological similarities. For example, Panthera has another specific epithet called tigris. tigris है ना, tiger. Panthera tigris is tiger. Panthera है ना, Panthera leo is lion. Solanum indicates species like nigrum and Melongena. Human beings belongs to the species sapiens. ठीक है, human beings की है sapiens, which are grouped in genus क्या है? Homo. The scientific name thus for human beings is written as Homo sapiens. ठीक है. ये जीन है ना, क्या बोल रहा हूँ, जीनस वाला कंपोनेंट, एंड द अदर sapiens इज द स्पीसीज वाला कंपोनेंट. ठीक है.
सो जीनस कंप्राइजेस ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, अब वही होगा देखो, स्पीशीज को ग्रुप किया, जीनस जीनस को ग्रुप, फैमिली है ना, रिलेटेड स्पीशीज जो भी है, तो comprises a group of related species which has a more characters in common in comparison to the species of the other genus. We can say that genera are aggregates of closely related species. For example, a potato and a brinjal are two different species but both belong to the same genus, जो कि है सोलनम। तो जैसे कि अब लियो पैंथरा है ना, अपना पैंथरा लियो है जो कि लॉयन है, लेपर्ड है पैंथरा पार्डस, फिर है टाइगर है पैंथरा टिग्रिस, विथ सेवरल कॉमन फीचर आर ऑल स्पीशीज ऑफ जीनस पैंथरा। लेकिन किस जीनस के अंडर आ रहे हैं तीनों के तीनों? पैंथरा के अंदर। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फिलिस। अब एक और जीनस है इन कंपैरिजन जो इनसे थोड़ा सा ऊपर बाद में फैमिली में क्लब हो जाएगा, राइट, तो वो है फिलिस, विच जहाँ पे आती हैं कैट्स, बिल्लियाँ, है ना, इसीलिए कहते हैं ना बिल्लियाँ एक ही फैमिली के हैं, शेर वाले जो भी है ना, तो सेम फैमिली में आता है। The next category is family, has a group of related genera, obviously, and still less number of similarities as compared to the genus and species, obviously. Families are characterized on the basis of the both vegetative and the reproductive feature of the plant species. Among plants, for example, three different genera, Solanum, Petunia, Datura, are placed in the family Solanaceae. ठीक है, तो ये सब सोलोनम पेटूनिया जो ये सब सेम फैमिली में आ गया। अमंग एनिमल्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल जीनस पैंथरा कंप्राइजिंग ऑफ लॉयन, टाइगर, लेपर्ड पुट अलोंग विद द जीनस फिलिस जो कि कैट्स है, ठीक है, कॉल फैमिली, फिर इनकी फैमिली को क्या कहते हैं? फिलीडिया, ठीक है। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ अ कैट एंड अ डॉग, you will find some similarities and some differences as well. They are separated into two different families. अब यहाँ पे families दो बताई जा रही है, जैसे फिलीडिया और कैनिडिया, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं। यू हैव you have seen earlier that categories like species, genus, families are based on the number of the similar characters. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of the characters. Other being higher category is assemblage of families which exhibit a few similar characters. The similar characters are less in number as compared to different genera included in the family. Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in order, क्या कौन सा ऑर्डर है? पॉलीमोनियल्स, ठीक है। मेनली बेस्ड ऑन, ये उल्टी सीधी प्रोनाउंसिएशन हो तो माफ़ कीजिए, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फिलीडिया, कैनिडिया, ठीक है, वैसे भी टिक करना होता है बट स्टिल सही होना चाहिए, ओके ओके मानता हूँ। क्लास, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है, वही है यार, मतलब सब रिलेट करेगा, एक ग्रुप में आएगा, फिर वो ऊपर 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 जाता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिब्बॉन आर प्लेस्ड इन क्लास मेमिलिया, ठीक है, along with the order। अब क्या आ गया? कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स द एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट, डॉग, तो सब आते हैं ना, बट अगर तुम एक डॉग को कंपेयर करो एक गोरिल्ला से, काफ़ी डिसिमिलैरिटीज तुम्हें मिलेंगी। तो जैसे जैसे तुम ऊपर जाते हो ना, डिसिमिलैरिटीज बढ़ती हैं अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में होंगे, क्योंकि वो ग्रुप ही इतना वास्ट है ना, इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म उसके अंदर उसने समा रखे हैं, तो कैसे तुम ज़्यादा सिमिलैरिटीज लेकर आओगे? स्पीसीज छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, तो छोटे ग्रुप से कम एनिमल्स से सिमिलैरिटीज ज़्यादा है। क्लास मेमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर्स ऑल्सो, ठीक है। ओके, फाइलम, फाइलम क्या है? क्लास कंप्राइजिंग ऑफ द एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद द मैमल्स कंस्टिट्यूट अ नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड, ठीक है, ये अब एक कॉमन कैरेक्टर हो गया। एंड और डॉर्सल हॉर्न न्यूरस सिस्टम इंक्लूड इन द फाइलम कॉर्डेटा। In case of plants, class with a few similar characters are assigned to higher categories called as division, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, ये याद रखना है इसका सीरीज, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। तो अब इसमें फाइलम और प्लांट्स के लिए होता है डिवीजन, ये भी याद रखना है, ठीक है। किंगडम में आ जाओ फटाक से। ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अ वेरियस फाइला आर असाइंड to highest category called kingdom animalia in this classification system of animals. In the classification system of animals, the kingdom Plantae, on the other hand, is a distinct and comprises all plants of various divisions. Henceforth, we'll refer to these groups as animals and plant kingdoms. Okay, so now, कहाँ थे हम? हाँ,
The taxonomic categories from the species to kingdom have been shown in ascending order of starting with the species in figure 1.1 जो कि हमने देख लिया. These are a broad categories. ठीक है. However, the taxonomists have also developed subcategories on the hierarchy to facilitate the more sound and scientific placement of the various taxa. Look at the hierarchy in figure 1.1. Can you recall the basis of the arrangement? For example, if we go to higher from species, ये थोड़ा ध्यान से सुनना. If we go higher from species to kingdom, the number of common characteristics goes on decreasing. फिर से एज वी आ सकता है, पूछा जा सकता है एज वी गो, मतलब असर्शन रीजन की तरह या फिर किसी फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन. एज वी गो फ्रॉम द एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग. अब तुमको कैसे घुमाएगा, लिख देगा एज वी गो डाउन, एज वी गो ऐसे लिख देगा ना, एज वी गो डाउन फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज द नंबर ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे चेंज कर देगा, स्टेटमेंट गलत होगी, फिर लिख देगा, या फिर द कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग, है ना, वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है. तो इसका ध्यान रखना. Lower the taxa, more are the characteristics that the members within the taxon share. ठीक है. Higher the category, greater is the difficulty in determining the relationship to the other taxa at the same level. Hence the problem of the classification become more complex. तो complexity कहाँ बढ़ रही है, ऊपर साइड बढ़ रही है, नीचे नहीं बढ़ रही, ऊपर बढ़ रही है. क्यों, नीचे ग्रुप ही छोटे हैं यार. टेबल 1.1, अच्छा ये टेबल 1.1 indicates the taxonomic categories to which some common organism like housefly, mango, wheat, इन सब का थोड़ा थोड़ा दे रखा है, तो एक बार पढ़ लेते हैं. पूछा जा सकता है, चांसेस ऐसा कंफर्म नहीं है, पूछा जा सकता है, बट मैन हाउस फ्लाई मैंगो वीट, तो ये सारे हैं एक कॉमन नेम, ठीक है, जो हम अंग्रेजी भाषा में प्रयोग करते हैं जिसका. फिर बायोलॉजिकल नेम जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड है, वो है होमोसेपियंस. ठीक है. मस्का डोमेस्टिका, मैंगीफेरा इंडिका, ट्रिटिकम एस्टिवम एस्टिवम. ठीक है. अब जीनस की बात करते हैं. जीनस, इसमें आगे वाले वर्ड सारे होमो, मस्का, मैंगीफेरा, ट्रिटिकम, ये कभी नहीं पूछेगा, तुम पता ही है यार, आगे वाला जीनस है ना. फैमिली, होमिनीडिया, मस्कीडिया, एनाकर्डिशिया. ठीक है. पोएशिया, पोएशी बोलेंगे, पोएशिया नहीं, पोएशी. तो फिर ऑर्डर है प्राइमेटा, डिप्टेरा, सेपेंडेल्स, पोएलिस. क्लास में आ जाएगा फिर मेमेलिया, इंसेक्टा, डाइकॉटिलिडेनिया, मोनोकॉटिलिडेनिया, ये सब याद कर लेना. फाइलम और डिवीजन में आएगा कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, एंजियोस्पर्मिया और एंजियोस्पर्मिया. ठीक है. ये दोनों एंजियोस्पर्म्स में आते हैं ना. तो यार इसमें ऑर्डर में तो याद हो जाएगा इजीली, ये डाइकॉट, मोनोकॉट, ये सब तो याद हो जाएगा. एंजियोस्पर्म में आते हैं, ये भी तुम्हें पता ही है. ठीक है. इंसेक्ट का, इसका भी इंसेक्टा है क्लास, है ना. फाइलम, डिवीजन, आर्थ्रोपोडा है. इसका कॉर्डेटा, मेमेलिया, प्राइमेटा, होमिनिडिया, ये तो आराम से याद हो जाएगा. ठीक है. होमो. फिर इसका मस्ट, इसमें डिप्टेरा एक याद रख लेना ऑर्डर में, और एक सेपेंडेल्स ये याद रख लेना. ठीक है. फिर एक ये याद रख लेना. ये चीज़ें हैं जो भूल सकती हैं, बाकी तो बेसिकली ये सारी बाकी हो ही जाएगा. तो जो भूल रही हैं उनको रिवाइज करके जाना. समरी भी कर ही लेते हैं, समरी भी क्यों छोड़ना है इसे, रीडिंग कर ही रहे हैं तो वाई शुड वी लीव दिस. अरे यार जूम हो जा ठीक से एक बारी, बस बस बस. Summary: The living world is rich in variety. Millions of plants and animals have been identified and described based on the large number still remains unknown. The number, the very range of organism in size of, in terms of size, color, habitat, physiological and morphological features make us seek the defining characteristic of the living organism. In order to facilitate the study of the kinds and the diversity of the organism, biologists have evolved certain rules and principles for the identification and nomenclature and classification of organism. The branch of knowledge dealing with the aspect is referred to as taxonomy. The taxonomical studies of the various species of the plants and animals are useful in agriculture, forestry, industry, and in general for knowing the bioresources and their diversity. The basis of the taxonomy, like the identification, naming, classification of the organism, are universally evolved under the international codes. Based on the resemblance and the distinct differences, each organism is identified and assigned a correct scientific biological name, and comprising two words as per the binomial system of the nomenclature. As organism represent occupies a place or a position in the system of classification, there are many categories, ranks that and are generally and are referred to as taxonomic categories or taxa. All the categories are constitute a taxonomic hierarchy.
So chapter is over, and we'll continue with the next chapter. और एनीथिंग एल्स, हाँ इसमें कुछ पार्ट रिमूव हुआ है ऑब्वियसली, टेक्नोमिकल एड्स यहाँ पे रिमूव हो गया, जो कि एक बहुत ही प्यारा सा पार्ट था, बट ठीक है, ओके. So chapter is done. Bye. Next chapter will be uploaded tomorrow, hopefully.